it is so important and necessary in higher education. Now, I would like to ask Jaya ma'am to continue her session of standard operation system of mentoring. Over to ma'am. Yeah, thank you, sir. And I just welcome all of you once again. Myself, Jaya Mukherjee from Basic Science and Humanities Department. I teach you people English, communication English. I will take your English class. So, mentor, the word mentor, I think everybody knows what is the meaning of a mentor, because this is a totally new atmosphere for you people. And some are knowing, some are not knowing, familiar or not familiar with the atmosphere, your campus, the local areas. So from here, can anyone say what is the meaning of a mentor before starting this session? Okay, one question I have got from top of my, from when we can do our English class. Now it's very soon that you are going to be present in the college campus, and definitely that time I will take your class. And before starting the class, I just want to know that mentorship. Today I am having a session with few people about standard operating procedure for mentorship. So any one of you can say me what is the meaning of a mentor? What is the meaning of a mentor? That being a mentor, what do you understand for you? I'm a person who guided another person for the any purpose. Yeah. Anyone else? Anyone else? Trusted counselor or teacher. Okay. So in a college, why you need a mentor? Why students are being divided to different mentors? You are having this mentorship. Doctors meeting. Why? To do some project. Momita ma'am, please mute yourself, ma'am, please. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah, what do you mean by a mentor? See, at your home, you are having guardians. Your mom, dad is there. Your brother, sister is there. If you do anything wrong, if you're not knowing about those things, at that time, what happened? They used to guide. So here in the college, so why you need a mentor? And why students are given different mentors, why they are being divided? You know, a mentor is someone who teaches and help you and give some valuable advice. Okay. So you are just under our mentorship, that at your home, you are just in your mentorship of your parents. They take care of yours. Now you are enough grown up. So any advice you need, any problem if you people are facing in the college campus, you need some kind of advice, you need some mental support. Because various kinds of things may happen. Students are not very much adjustable to this new environment. They feel that they are far away from home. Many students are here from first time, they are living far from their parents. So that is what our mentors do. So now I'm going to start the session about the standard operating procedure for mentorship. What is that? So I would like to start with the introduction that a mentor is a friend, your philosopher, and your guide. For a student joining this BTech courses in Chavasa Engineering College, when your student joins an engineering college, he or she may not have a clear idea regarding the college and the course. He or she may not know how to conduct, what would be his prospect, how to prepare for various competitive exams, facing the interviews, about the course, anything,
etc. And guidance is also required in case for a student faces any kind of domestic or any other problem. As I have explained this thing earlier, that what kind of things you may face, what type of psychological pressure, or you could say psychological adaptation you may feel to adapt in this new atmosphere. A mentor is a single point contact to assist the student of his or smooth transition from student. Now, what is the role? Being a mentor. Suppose I am the mentor of Nisha Bharti, Aniket Kumar, Wasif Akhtar. I am the mentor of these persons. For example, I am just saying, so what will be the role? What will be the role of a mentor? So a And mentor, you will guide us to, yeah, and please. you will guide us to do the work, what we are doing, and the help us to do the work. Okay. So first thing is what? So I should be have a trust on you. You should have a trust, because every Yes. relationship is built on a trust. So how much I will trust you person, that much trust you have to be. Yes or no? Yes, ma'am. Of course, ma'am. Yeah, without trust, we cannot have any relations to be built up. Okay. So what is the role of a mentor? The next very important point, what is the role? So a mentor is required to known for the following respect his or her mentee. You will be basically having your mentors from basic science and humanities department, which teachers are here. And the list will be provided to you people that under whose mentorship you are with. Now, first point is that intimate knowledge regarding the student. I should have a proper knowledge about you persons. Next, family background of the students. See, all students are not from the same family background. Some may be from a very high class, some may be of middle class, some maybe have low class. Students of different family background have different types, because they are basically from that family background. So adaptation is very much less. Everyone have to adapt this college atmosphere. So first it will think that ये तो बहुत tough है यहाँ रहना. Second में चलेगा, no problem. Third one will say ना यहाँ तो मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा सो रहा है, I am very in a good atmosphere. Everyone have their own critical analysis. Next, the financial status. Fourth one is the academic background. Fifth one is the status of attendance. And last is difficulty, if you are having any kind of difficulties. Now, what is the duration? A mentor will normally continue as mentor of the student from admission to pass out. If I am a mentor, the date you are taking admission, the date you will pass out from the college, I will be your mentor. Next one, number of students per mentor, how it is being done as a number of students per mentor. To ensure proper guidance and mentoring, a mentor should not be having more than 30 mentees under him or her. Okay. We cannot have more than 30 mentees under ourselves. Now, what are the records of mentees? But before coming to this point, record of mentees, first thing is that you have to fill a Google form that will be provided to you people later. In the previous session, your seniors have also filled it up this Google form, or a form will be provided when you will be physically present in the class, in the college at that time.
You have to feel there will be certain kind of information. जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं ना हम लोग, फॉर्म फिलअप में हम लोग का क्या रहता है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रहता है जिसको हम लोग भरते हैं, क्यों, जानने के लिए, एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उसी तरह से रिकॉर्ड ऑफ मेंटीज में क्या क्या चीज मेंशन होता है। ओके, so what are the different records, what are the kinds of information you have to fill in a mentorship form, and that record is being maintained in a record book of a mentor. So the mentor will maintain the record in a hardbound register. We have a register for you people to maintain the records of you people. So इसमें क्या क्या informations देना, what kind of informations you have to fill, you have to provide, क्योंकि उसी से हम लोग रजिस्टर में आप लोग का नोट अप करते हैं। तो पहले क्या है, your name, that is the student's name, your date of birth, your mobile number, your email ID, and what is your local address, what is the permanent address, your guardian contact details, because if you are very mischief, we have to complain about you, at that time we need a guardian. स्कूल लाइफ में क्या होता था, बच्चा ने बदमाशी किया, bring your diary, call your parents, पेरेंट्स कॉल होता था ना। द सेम वे यहाँ पे मेंटर जो होता है वही करेगा आपके साथ। बदमाशी ज्यादा होगा, एक दो बार वार्निंग देगा, अब तो बच्चा बदमाश हद से पार हो गया इसका बदमाशी, नाउ वी हैव टू कॉल गार्जियन। इसके लिए हमारा क्या जरूरत पड़ता है, योर गार्जियन कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड डाटा फॉर ऑफलाइन क्लास, आई थिंक इट विल बी फ्रॉम मार्च वेरी सून। Now the expected data says to me, I think you have, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम हरी में हो, when you will come to the college, Yes, ma'am. है ना? Okay, definitely. Now the time has come. अब यहाँ पे अब गार्जियन का नंबर रॉन्ग मत देते ना, डोंट गिव योर गार्जियन नंबर रॉन्ग, बिकॉज वी विल आस्क योर गार्जियन आल्सो। मेंटर का ये काम होता है, hello, how many time he is spending on his studies, do he is a laborious kind of students, उसका performance पहले कैसा था, are you satisfied, this type of questions are being asked from us। ये कभी मत सोचना कि वो नंबर दे दिए that finish, I think most of the guardians हम लोग को बोल ही देंगे। Okay, so at the time of view you have to give your correct guardian number, you have to provide 2 numbers of your guardian। एक तो घर में रहता है ये नंबर, now no one can say ये तो पापा का नंबर है, घर में तो मम्मी का फोन ही नहीं है। Okay, you should provide at least 2 numbers of your guardian and we will keep a record। हम लोग एक रिकॉर्ड बनाते हैं जिसमें at this time we have called, what the guardian has given, and second call जब हम लोग करेंगे after some day, उसमें क्या होता है कि अब आपका क्या है, आप वो क्या कर रहा है, gather the information of you when you are staying at home, how many time you are spending, guardian का कोई complaint है, these things we are maintaining in a record। ठीक है, next आपका क्या हो जाता है, क्या है, anything wrong अनिकेत कुमार? Ma'am, if the student are living in the hostel, then what's the purpose of calling to guardian? एकेडमिक बेटा होता है ना, एकेडमिक थिंग तो होते ही आपका, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एकेडमिक थिंग्स व्हिच यू डू इन योर कॉलेज। टेस्ट जो होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन होता है, फर्स्ट इंटरनल देखते हैं, That record फर्स्ट are क्लास already present in the college. हाँ Ma'am, कॉलेज, that records are already present in the college. कॉलेज कैंपस में हो, बट वी देखो यहाँ पे जो होता है ना टेस्ट, इंटरनल टेस्ट वगैरह होता है, दैट टाइम गार्जियन को वो मार्क्स तो नहीं ना भेजा जा रहा, द थिंग इज दैट बिटवीन यू एंड अस। Yes, ma'am. ठीक है, तो पहला में तो चलो सबको पहला गलती माफ है, सेकेंड डे में अगर मार्क्स डिक्रीज होता दैट मीन्स यू आर हैविंग अ पुअर परफॉर्मेंस, व्हाट इज द रीजन, दैट थिंग वी हैव टू इन्फॉर्म टू योर गार्जियन, क्या उसका पहले भी इसी तरह का था परफॉर्मेंस और हियर ही इज डिक्लाइनिंग,
हम लोग इसीलिए बोला ना एकेडमिक बैकग्राउंड, वी यूज टू सी द एकेडमिक बैकग्राउंड। देखो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट है हु आर फ्रॉम द हिंदी मीडियम, उन लोग को क्या है, हिंदी है, उन लोग को इंग्लिश में थोड़ा पूरा क्लियर कट इंफॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं, समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। Some are from CBSE, ICSE background. They do not face any kind of problem. See, every student is not good in everything. Yes, ma'am. है ना, तो उसको समझाने के लिए उसका क्या प्रॉब्लम है वो बोल सकता है टीचर को, वो टीचर को बोल सकता है या अपना मेंटर को बोल सकता है, ठीक है। दैट्स व्हाई मेंटर इज दैट एक घर में जैसे गार्जियन होते हैं, व्हेन यू स्टार्ट गोइंग टू योर स्कूल, at that time you are having a class teacher, parents teacher meet is there, so like that wise only in your college you are having a mentor. सिंपल यही है। मेंटर में क्या है, जो आपका जो मेंटर है आपको प्रॉब्लम है बोल सकते हो उसको। यहाँ पे एवरी टीचर यू कैन से, एंड एवरीथिंग इफ यू फेस जो होता है ना, नए जगह पे है मैडम, कैसा क्या करना है, कुछ गाइडेंस चाहिए, किसी तरह का सपोर्ट चाहिए, एट दैट टाइम आप अपने मेंटर को बोल सकते। आई एम क्लियर? अभी तक जो चीज मैंने आपको समझाई, इज इट क्लियर टू यू पीपल? और Yes, ma'am. अगर Yes, अभी भी ma'am. कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। No doubt, ma'am. ओके, तो अब देखो हमारा रिकॉर्ड बुक में जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसके लिए फॉर्म आपको जो मिलेगा, आइदर वो गूगल फॉर्म में आपको मिलता है, ओके, आइदर आपको वो गूगल फॉर्म में आपको आइदर वो मिल सकता है, या फिर आपको क्या बोलते हैं वो एक फॉर्म हम लोग यहाँ पे देंगे, एक फॉर्म भी हम लोग आपको दे सकते, तो उसमें भी आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आपका देखिए क्या है। अब रिकॉर्ड के लिए तो मैंने आप लोगों को बोला है, फर्स्ट थिंग है आपको स्टूडेंट नेम, नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, थर्ड योर मोबाइल नंबर, फोर्थ इज योर ईमेल आईडी। नाउ नेक्स्ट वन इज योर लोकल एड्रेस, permanent address, your guardian name, contact number and mail ID if they are having. Next was your annual family income approximately. I think some of you have submitted already in the college this one. Your academic background, from where you were pass out. Next is your health, if you're facing any kind of health issues. If someone is not physically all right, or someone is physically internally weak, or someone is having any kind of health issues, they may can say that what problem, because देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जिसके साथ प्रॉब्लम होता है फिजिकली, उसके वो हम लोग हो सकता है कभी कुछ बात बोल देते, someone takes in a very sentimental, छोटी सी बात को बहुत कुछ सेंटीमेंट में लगा लेते हैं। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम है बॉडी में, वो ज्यादा वर्क नहीं कर सकता, ही इज प्रॉब्लम इन हिज इंटरनल ऑर्गन्स, और कुछ भी हो सकता है, दे आर हैविंग सम ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, एनी स्टूडेंट में हैव। तो अगर किसी तरह का किसी को फिजिकल मींस प्रॉब्लम है या कुछ हेल्थ इश्यूज है, वो क्लियरली अपने मेंटर को बोले या कॉलेज में पहले ही इन्फॉर्म कर दे। इससे क्या होगा कि दैट वी टीचर्स विल टेक स्पेशल केयर अबाउट देम। एंड अगर उस वैसा कोई स्टूडेंट है तो मेरा सजेशन है, स्पेशली यू ऑलवेज हैव योर मेडिसिन्स विथ यू। मेडिसिन्स अगर आप कुछ इंटेक करते हैं फॉर योर हेल्थ प्रॉब्लम्स या डिजीज के लिए, तो अपने साथ मेडिसिन वो रखे आप लोग, विच मेडिसिन्स यू रेगुलरली टेक। नेक्स्ट वन इज योर record attendance. Some student have just told me, madam हम लोग तो कॉलेज, मैम if there is any criteria for attendance, बस वही attendance criteria पे ही अब आ रहे हैं। दिशा कुमारी, I am coming to attendance criteria only. पेरेंट्स को पता है मेरा बच्चा तो कॉलेज में है, हॉस्टल में है, वो तो क्लास आ ही रहा है, इन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहा है। चलिए फर्स्ट हाफ का क्लास कर लेते हैं, सेकेंड हाफ में खा के थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज बहुत क्लास
See, when I was in your age, हम लोग को भी यही लगता, एक दिन क्लास नहीं करेंगे तो क्या हो, मुफ्त तो क्लास अटेंड करना, नोट्स तो मिल ही जाए. No. If you don't attend the class, the next day the reason will be asked to you people. अगर the reason appropriate reason नहीं रहा, first time you will be warning will be there. Next time information to your parents will be given. College खोलने के बाद, when the college will open, at that time, please don't miss the attendance. You have to continue attend the class on a regular basis when you are in college campus. When you are taking leave, please inform your HOD, give an application to your HOD that you will be absent for these days. And your parents' consent should be also there. Everything should be valid on your parents' consent. ये है अटेंडेंस का क्राइटेरिया. अटेंडेंस आपको आना है. ये नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो गया, चलो ना 10 मिनट लेट जाएंगे, मैम थोड़ा ऊपर में आने में लेट हो गया, मैम खाना खाने में लेट हो गया. प्लीज मेंटेन द टाइम शेड्यूल. मैम, हु इज द HOD ऑफ BSH? Dr. Dinbandhu Mandal sir is the HOD of BSH department. He will teach you mathematics. Now, next क्या है? Future objective. What is the future objective? Next is your interaction record. Class में चुपचाप बैठ गए, no interaction with anyone. You have to be interactive. Last and the least, anything else, any other problem else regarding the above mentioned? अब हमको बोलिए, अब any problem to you now? अभी और कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो. You can clearly say that madam, इसमें प्रॉब्लम है, I have to do this. Any question from your side? No, ma'am. Okay, how many of you are planning to have a bunk in attendance when the college will reopen? Okay, one hand I have gone. Bharat. Yeah, Bharat, please unmute yourself. Yes, ma'am. So what is the planning when you will come to college? Till now, I have not planned anything. Oh, means you are planning to bunk. You have raised your hand? No, No, just now you raised your hand when I was saying no, clear cut. after going to college, I will decide. Oh, one for 2 days for wandering the campus and surrounding. Okay. Okay, Tabomoy. Okay, next time coming. See, a mentor will also open a social network account with all mentees as its members for quick dissemination of information. Okay. We will open many things. We will say, we will give you a basic knowledge for everything. You people are totally new here in the campus. So everything will be shared. If you are facing any problem, if anyone is having local knowledge, तो कोई दिक्कत है, हम लोग आप बोल सकते हो, कोई भी टीचर को बोल सकते हो. स्पेशल मेंटर मेंटी का क्या है, आप स्पेशल उस टीचर को बोल ही सकते हो. यू आर जब उसका अंडर में हो, यू कैन से. But other than that, you can say to other teachers also. You are free to say if you are having any club in college. Yeah, we are having one club in college, that is NDLI. Okay, National Digital Library. See, college is यहाँ तो study होता है ना, तो उसके library आप लोग को मिलेगा. You will get many kinds of books. You will enjoy your reading. Okay, this thing we are having. और एक स्टूडेंट के लिए शायद हमको लगता है पढ़ने के लिए यहाँ आ रहा, तो इससे अच्छा कोई चीज हो नहीं सकता. Get the various knowledge of these books.
You will get some videos, informative videos of NPTEL. अब next हम आते हैं mentoring. What is mentoring? Okay. The mentor will be in touch with the student continuously and hold formal meetings at least once in a month with the mentees. Any problem which can be resolved by the mentor will be brought to the notice of the HOD, who would intimate appropriate action. Okay, so the mentor will be in touch with you people. We will have a meeting with you once in a month, and anything problem, any suggestions from your side, it will be bring to the concern of your HOD sir, and he is authorized person that who will take a appropriate decision or action. Now the last thing is the conclusion part. What is the conclusion? Okay, so यहाँ तक कोई problem? Any problem in understanding? Any problem regarding these things? अब हमारा conclusion क्या निकलता है? Finally, what is the conclusion of this standard operating procedure? Standard operating procedure को हम in short बोलते हैं SOP. So what is the conclusion of this SOP? Okay. So the SOP is indicative and non-exhaustive. A mentor has the liberty to modify the SOP. We are having some kinds of things. हमारा कुछ points है that we can modify the SOP as per the requirement, keeping the essence of the matter alive. The mentor and mentees will have a mutual confidence in each other. As first only I have told, that trust is the most important thing to build any relationship. Trust and the confidence in each other so that even problems related to sensitive issues could be discussed freely and resolved. Now this mentoring should be considered as a social responsibility of the mentor to produce not only an employable engineer, but also a responsible citizen of India. हमारा सिर्फ यही एक एम्बिशन, देखिए चीज नहीं होना चाहिए कि हमको एक एम्प्लॉय करना है और एक एम्प्लॉयबल इंजीनियर बनना है. Something should be there that we should be a responsible citizen also. An engineer is always there to benefit the society. So you people, you are pursuing a BTech degree, so try to do something that will benefit the society. Getting a job is not enough. Try to be a responsible citizen also of India. Okay. Now, any queries, any questions from your side, you may ask me. आपको कुछ भी पूछना, you are free to ask. कुछ से समझ में नहीं आया है, that thing also you can ask. Anyone is having any doubts, any question, कुछ भी पूछना है, you can ask me. Anyone? All of you understand ये क्या है? SOP क्या होता है? SOP for mentorship. This is standard operating procedure for mentorship. All of you have understood? Yes or no? Yes or no? I'm just asking. Ma'am, how to explore new things? Tapama, yes, ma'am. Yeah, 1 minute, I missed one chat. You can unmute yourself. No problem. You can just say, Disha Kumari has given me, ma'am, how to explore new things and manage our study because surrounding is totally new. Yeah, for that only you are having this mentorship.
ये मेंटर मेंटी इसीलिए बनाया गया है, टीचर्स आर, स्टूडेंट्स आर बीइंग डिवाइडेड लाइक दैट वाइज ऑल्सो। इसको अडेप्ट कैसे करना, प्रॉब्लम्स जो इसको कैसे आप लोग ओवरकम करना है, किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, फॉर दैट ओनली वी आर हैविंग। स्टडीज भी है, स्टडीज में भी हम लोग आप लोगों को हेल्प करेंगे। बिसाइड दैट स्टडीज, इन न्यू सराउंडिंग में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी तरह के किसी भी तरह का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, यू आर फ्री, ऑलवेज फील फ्री टू से। बोले ना, घर में मम्मी पापा रहते हैं ना, जैसे योर पेरेंट्स आर, ट्रस्ट करके आपके पेरेंट्स जो है दे आर गिविंग यू एडमिशन टू आवर कॉलेज, चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज, हम पे विश्वास करके कि तो आपका एडमिशन यहाँ करवाए हैं। सो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनका ट्रस्ट को हम लोग को रखना है। We will take care of you people, and there will no complaint from your side. If you are having any kind of problem, you are always free to say. Anyone, any questions? Okay, ma'am. Disha Kumari. Okay, ma'am. Okay, Disha, I hope I have cleared. Crystal clear. Okay. It was a great section. Thank you, ma'am. Okay, thank you, Disha. अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है ट्रस्ट। हम पहले भी बोले हैं, लास्ट में भी यही बात बोलेंगे, ट्रस्ट। वी विल ट्रस्ट यू हाउ मच, प्लीज ट्रस्ट ऑन अस। आपके पेरेंट्स यहाँ आपका एडमिशन देके हमारे ऊपर ट्रस्ट किए हैं, एंड वी प्रॉमिस दैट वी विल नॉट ब्रेक देयर ट्रस्ट। एंड प्लीज यू स्टूडेंट्स ऑल्सो डोंट टेल अ लाई। इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, टेल द ट्रूथ। क्योंकि एक बार आप अपना झूठ बोलोगे, एक बार आपके साथ हमारा ट्रस्ट खराब होगा, देन वो कभी बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, ऑलवेज हैव अ ट्रस्ट। ओके, एंड नाउ आई एम क्लियर टू यू पीपल? क्लियर? थैंक यू। ओके दिशा, वी विल मीट सून। Okay, so hello everyone. Thank you. Yeah, thank you, Okay. ma'am, for this wonderful speech, because you have already mentioned everything about the mentorship and mentoring. Am I audible? My voice is clear? Yes, yes, sir. Okay, very good. So yeah, so in short, mentors are like maybe your guide. Okay, जो टीचर होते हैं ना, कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हाँ किसको जाके कुछ बोलूं, वी आर फ्रेंड्स, वी हैव फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, मगर कुछ चीजें होता है जो हम लोग को लगता है कि हाँ वी शुड डिस्कस विद टीचर्स, मगर अगर एक ही टीचर के पास सभी लोग जाएंगे तो वो सही नहीं होगा, सिस्टमेटिक नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसीलिए हम लोगों को एक छोटा छोटा स्मॉल ग्रुप में डिवाइड करके स्टूडेंट लोगों को हर एक टीचर के अंडर में दिया गया है, ठीक है ना। Okay, so all of you are now a college student after school. Okay, so you may think that okay, we are now independent, we can do anything, we will enjoy our college life, fine. But the problem is that these 4 years will just fly. Okay, you cannot imagine that how fast it will fly. So that's why we have to utilize this valuable time, and that's why we need a guide. Okay, so हम लोग कितना guide कर पाएंगे I don't know, but we can talk. So for this conversation and for this talk, we should have a regular meeting, maybe in a certain interval. Okay, so in this session, after this, okay, firstly let me share the groups. Okay, you all are distributed in a small groups. I can share you that. Yeah, can you see my screen? Yes, sir. Yeah, so the group 1, all civil students, mentor is
Momita madam. Okay, and for today you will have a maybe 15 minutes meeting with the ma'am. All civil students. Okay, all electronic students will talk with Dr. Suresh Kumar sir. So Suresh Kumar sir is today is on leave or in other activity of the college. So I think he will talk with you maybe in the other time. Okay, and all electrical students mentor is Dr. Dinabandhu Mondal sir. Okay, and your ID is this one. बेटर अच्छा होगा तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. ऑल मैकेनिकल स्टूडेंट्स का जॉया मैम होंगे मेंटर. उनका भी यही पर्सनल आईडी मीटिंग आईडी है. ओके, all not all CS students from students ID 1 to 26 I will be the mentor. Tarasankar Das, I will be the mentor. And CS students from students ID 28 to rest of all will be Manoj sir will be the mentor. Mr. Manoj Kumar Mondal, your physics teacher. Okay, so this is the gist. तो आज के लिए क्या होगा ना, हम लोग ये मीटिंग खत्म होने के बाद ये इंडिविजुअल मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लंच से पहले हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे. वहां पे हम लोग एक दूसरे से तो बातचीत करेंगे. यू विल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द टीचर, टीचर विल इंट्रोड्यूस टू यू. ओके, सो एंड टीचर maybe he or she will share his or her contact number. Okay, and later on when they will make a group, maybe WhatsApp group, maybe other group they will make. Okay, so they will tell all these things in that personal meeting. Okay, when the groups will join in that individual meeting, and that is will be the procedure to communicate to each other for individual groups with the individual mentor. Okay, and so there will be some regular meeting between the mentor and mentees. Means you are the mentees, students are the mentees. Okay, इसी स्टूडेंट्स या इसी स्टूडेंट शायद आज नहीं होगा, सर कुछ दूसरे काम में, कॉलेज के दूसरे काम में बिजी है. तो सर का फोन नंबर शायद मिल जाएगा तुम लोगों को, तो हम लोग तुम लोगों को बता देंगे. ठीक है ना. अभी जो बाकी लोग हैं वो लोग जो ग्रुप से उसमें ज्वाइन हो जाएंगे. ठीक है ना. अगर कुछ दिक्कत है तो सर से डायरेक्ट भी फोन करके पूछ सकते हो. मे बी दे हैव सम अदर प्लान, मे बी नॉट टुडे दे वांट टू टॉक विद यू, मे बी सम अदर टाइम. ओके, सो आई थिंक Momita ma'am, Dinabandhu sir, Jaya ma'am and myself are ready to talk. Maybe Manoj sir also. Okay, so we will join in that individual groups and we will introduce ourselves. मतलब हम लोग नाम तो सभी को इंट्रोड्यूस करना ही है, कहाँ से है और कैसे हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. हाँ, इस सैटरडे को हम लोग एक बार मिलेंगे. वो जो बोलना है वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक प्रोसीजर होना चाहिए. तो अभी तुम लोग शायद ऑल द इंफॉर्मेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल. ओके, सो लेटर ऑन मे बी कुछ दिनों के बाद हम लोग का एक मे बी व्हाट्सएप ग्रुप होगा. कुछ ग्रुप होगा तो वहां पे हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. और जो मेंटरिंग ग्रुप है वो only those students will contact with that teacher. ठीक है ना. अच्छा, और तुम लोगों को इसका एक एडवांटेज लेना है, तुम लोगों को लेना है, क्योंकि वी मे बी एन इंटरफेस बिटवीन द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड यू. ठीक है ना. कुछ चीजें कॉलेज में जब बोलना है और शायद कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन तुम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, मे बी ऑब्वियसली आउटसाइड एकेडमिक थिंग्स. कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं हम लोग. ठीक है ना. कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर कॉलेज कुछ क्लब है कि नहीं. ठीक है ना. क्लब्स बहुत से हो सकते हैं. आर्ट्स क्लब होता है, म्यूजिक क्लब होता है, फुटबॉल क्लब होता है, क्रिकेट क्लब होता है, हर एक क्लब में होता है. तो हम लोग भी ऐसे कुछ प्लान कर सकते हैं. ठीक है ना, कुछ करने के लिए. सो आई वुड प्रेफर एवरी इंडिविजुअल ग्रुप्स विल डू दैट, or maybe in after a certain time there will be a competition or match between those groups maybe, and your teacher will guide you. Okay, so with that I think yeah, sports club as such हम लोग का कुछ गेम स्पोर्ट्स होता है, एनुअल स्पोर्ट्स वगैरह होता है, मगर अभी क्लब के हिसाब से अभी नहीं है. ठीक है, बट मे बी इन द नेक्स्ट टाइम इट विल बी देयर. अगर तुम लोग इसको थोड़ा आगे आके शुरू करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट दैट एक्चुअली, and we will help you obviously. ठीक है ना. so you have to take this advantage from the teachers. जैसे यार हम लोगों को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, obviously about the academic things and also outside academic things. As ma'am has said that you can share your problems also, maybe not in the group, maybe personal call. ग्रुप में शायद बोल नहीं पा रहे, कुछ लोग होता है
सभी के सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो मैम के साथ और सर के साथ पर्सनली कॉल करके बोल सकते हो। तो इसलिए कॉन्टेक्ट नंबर और कुछ कम्युनिकेशन का कोई वे होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इंडिविजुअल मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर कोई मीटिंग में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो प्लीज वेट, और मे बी इन अदर डे द टीचर विल इन्फॉर्म यू। ओके, सो आई थिंक यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लिस्ट एंड अच्छा, सीएससी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया ना? किसी मतलब कौन सी नाम तक कौन मेंटर है? Excuse me, sir. I have Yes, one doubt. हाँ, Actually, बोलो। there is a student ID 1 to 26. That means 0012 to 0026 now. Right. Okay, sir. Okay, I can share you that thing also. Just let me. I have that Excel sheet. Our HOD sir has made this. Just. Okay. Okay, got it. Actually, yeah, I can tell the names actually. The names like from बाकी ब्रांच को तो क्लियर हो गया है ना, कौन से तुम लोगों का मेंटर है। सीएससी का हाँ, स्टूडेंट आईडी 219001001001001 से 219001001001026 तक, ठीक है। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पूनम कुमारी तक यहाँ पे है। दिस इज नॉट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, नो प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट आईडी 26 तक है डॉक्टर या माई सेल्फ ताराशंकर दास, एंड बाकी 28 से है, उसके बाद 26 के बाद ही 28 है। 28 से बाकी जो है वो लोग मनोज सर तुम लोगों का मेंटर होंगे, ठीक है। तो अगर कुछ, हाँ भरत, अच्छा ठीक है, अगर कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग ये मीटिंग लीव होके, ठीक है ना, उसी इंडिविजुअल मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। क्लियर, सबको क्लियर हो गया ना वहाँ पे? Sir, there is one more thing. हाँ बोलो। There are many students who have not provided with their student ID. So what they will do? Okay, who has not get his or her student ID, they will join with Manoj Mandal sir's list, Manoj Mandal sir's group actually. हाँ, राइट। बिकॉज हम लोग यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट है स्टूडेंट्स वहाँ पे देखे हैं, कुछ लोगों का स्टूडेंट आईडी नहीं है। Excuse me, sir. One minute. I have already started my induction program in my personal meeting room, so students of mechanical can join. Okay. So we are ending this meeting ID here. Okay. So Devandu sir, Momita ma'am, Jaya ma'am, and myself, and maybe Manoj sir will start their individual meeting. Okay. So I think you don't have any more doubt. Okay. And if anything you need to know, then I will notify you through the Telegram channel. Right? अगर कोई टीचर मीटिंग स्टार्ट नहीं की है तो तुम लोग वेट करना, और आज के लिए बस 10 से 15 मिनट के लिए होगा। विल जस्ट हम लोग एक दूसरे को जान लेंगे, तो नेक्स्ट टाइम से विल एंड अपना नंबर ले लेंगे, फोन नंबर। नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो मेंटरिंग सेशन है वो शुरू करेंगे, ठीक है। इसी के साथ वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर। थैंक यू ऑल एंड सी यू इन द मेंटरिंग सेशन। थैंक यू। सुरेश सर आज नहीं लेंगे, तो वो तुम लोग के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, तो प्लीज वेट फॉर दैट। Sir, now we can leave the meeting.